Muons are fundamental particles in our universe that are essentially exactly the same as electrons, but heavier, 206.77 times heavier to be precise. Muons are super fascinating for a number of famous reasons, including, and this is definitely an incomplete list, as an experimental test of time dilation, as a catalyst making fusion possible at room temperature, and that they can be used to make muonic versions of atoms, like muonic hydrogen, with a proton and a muon instead of a proton and electron. But muons themselves decay into an electron and some neutrinos after just a few microseconds on average, which makes them hard to store. So to do experiments on muons, you need to have a source of muons on hand. A small number of muons are produced naturally by cosmic rays striking our atmosphere, but one of the best ways of consistently and reliably making a lot of muons is with a particle accelerator. First, you take hydrogen and you strip off the electrons, leaving you with protons. Then you accelerate the protons really fast in an electric field, or a bunch of electric fields, and crash them into some other atomic nuclei, like lithium or carbon or whatever. The energy of the collision creates a whole mess of particles that goes flying out, but most importantly for our purposes, it creates a particle called a pion. Either a pion with a positive electric charge made from an up quark and an anti-down quark, or a pion with negative electric charge made of a down and anti-up quark. If the pions keep traveling in a vacuum so that they don't bump into anything else, they'll spontaneously decay after about 26 nanoseconds, most frequently turning into a muon, which you can use for fusion or testing special relativity or making cool cloud chamber designs. And that's how you make muons. Accelerate protons with enough energy that when they crash into other nuclei, the energy of the collision creates pions, which then decay into muons, which of course, after about 2.2 microseconds, themselves spontaneously decay. If you want to prevent your mind from Okay, we just finished watching how to make muons. और जैसे muons हमने देखा कि वो एक इलेक्ट्रॉन का ही पार्टिकल है. इलेक्ट्रॉन से थोड़ा भारी है muons. So हम muons के पीछे इतने क्यों पड़े हैं? Why we are so focused on muons? The reason is very simple कि हम अगर म्यून्स को लिए उसकी वेट ज़्यादा है, सो उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती है. सो जो चीज़ हम इलेक्ट्रॉन से नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन्स के ऑब्वियसली बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होते हैं. वैसे म्यून्स के भी कुछ ज़्यादा यूजेस है, बट द म्यून्स इज़ लाइक इट्स अ माइक्रो पार्टिकल, इट्स एन सब एटॉमिक पार्टिकल. सो वो जल्दी डिके हो जाता है इलेक्ट्रॉन में. तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है, इलेक्ट्रॉन तो हम एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, पर म्यून्स स्टेबल नहीं रहता, वो इलेक्ट्रॉन में तब्दील हो जाता है. सो व्हाट डू वी डू? अगर हमें म्यून्स से एक्सपेरिमेंट करना है तो हम क्या करें? वेरी सिंपल. व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक एन अनदर पार्टिकल. हम एक एटम लेंगे, उसको स्ट्रिप कर देंगे, उसके प्रोटॉन चुरा लेंगे. वाई? प्रोटॉन चुरा लेंगे और उसको एक्सेलरेट करेंगे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि उसके अंदर कुछ थोड़ा सा और एनर्जी आ जाए और एक एटम, कोई भी एक बड़ा एटम है जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम, हम उसे जैसे टकरा देंगे. सो उसको टकरा दिया तो अभी क्या होगा? वो डिके हो जाएगा. सो हम उसको देखेंगे कि उसमें से कुछ पार्टिकल्स आते हैं, तो उसमें से एक होता है पायन. ओके, और पायन भी अनस्टेबल पार्टिकल है, सो इट विल ऑल्सो डिके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो वो हो जाएगा म्यून. एंड विद द हेल्प ऑफ द म्यून वी कैन डू अवर एक्सपेरिमेंट. सो अगर आपके पास ऑलरेडी म्यून है तो उसे आपको तुरंत एक्सपेरिमेंट करना होगा, नहीं तो वो डिके हो जाएगा. अगर आपके पास नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस विच आई जस्ट डिस्क्राइब, एंड फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो डिके होना ही है इनटू इलेक्ट्रॉन विच इज़ लाइक द लास्ट स्टेज प्रोबेबली, जहाँ पर वो स्टेबल हो जाएगा. बाकी सारे पार्टिकल्स अनस्टेबल है, इसलिए वो डिके हो जाएगा. ओके, तो मेरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जितने हमारे डिस्कवरी इतने ही है फिलहाल. और भी पता चले, और पता चला बीच में कुछ और एक ट्रांजिशन है जो हमने अभी तक देखा नहीं. हो सकता है कि इसके बाहर कुछ है जो हमने अब तक ऑब्जर्व नहीं किया. सो दैट्स हाईली पॉसिबल. सो इट जस्ट वन ऑफ द थिंग्स ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड जस्ट अमेजिंग थिंग टू सी दैट सो मेनी थिंग्स हैपन इन द subatomic area right now in your body, in everything over there which you can't observe, which you can't see. So it's just amazing. Okay, till next time guys, bye.